आयुर्वेद में चरक भेल कस्य सभी आचार्यों ने हृदय को कोष्ठांग माना है। पुंडरीकम सदृशम हृदय स्थाय अधोमुखम जागृत सोपिति स्व प्रस्थ निर्मलित अर्थात हृदय कमल के समान अधोमुख होकर रहता है। जागृत अवस्था में प्रफुल्लित एवं सुप्त अवस्था में संकुचित होता है। हृदय की स्थिति आचार्य सुश्रु ने शरीर स्थान में हृदय की स्थिति दोनों स्तनों के मध्य मासी द्वार के समीप सत्तुरजतम के अधिष्ठान हृदय नामक मर्म में बताया है। हृदय के नीचे बाईं ओर पीलिया फुफ्फुस यानी लंग्स तथा दाईं ओर यकृत यानी लीवर और क्लोम है। हृदय की उत्पत्ति, हृदय का ओरिजिन कहां से हुआ? सुडित कप प्रसादम हृदय अर्थात रक्त और कप के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति बताई गई है। हृदय की उत्पत्ति रक्त और कप के प्रसाद भाग से मानी है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ शरीर में हृदय की उत्पत्ति चौथे माह से व्याख्या चौथे माह में होती है। स्रोतस प्रकरण में आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने प्राणवाह एवं रसवाय स्रोतस के मूल में हृदय की गणना की है। मर्म प्रकरण आचार्य सुश्रुत ने उर प्रदेश के मर्म में हृदय को सदा प्राण हर मर्म माना है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के त्रिमय अध्याय में त्रिमम में हृदय का वर्णन किया है। दक्ष प्राणायतन में हृदय की गणना की गई है। हृदय को उच्च का स्थान माना है। दो प्रकार के ओज होते हैं, परोज अपरोज। परोज जो होता है वो हृदय में रहता है और अपरोज संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। हृदय का महत्व, हृदय पर आघात होने पर मूर्छा, उसकी भेद होने पर मृत्यु हो जाती है। आयु प्रमाण में है, संपूर्ण शरीर में है। हृदय रस बात आदि मार्गों सत्य बुद्धि इंद्रिय आत्मा और प्राण का स्थान हृदय। हार्ट मॉडर्न में क्या कहा गया है? हार्ट इज a conical hollow muscular object situated in the middle mediastinum. It encloses in the pericardium. It pumps blood to various parts of the body to meet their nutritive requirement. ब्लड को पंप करता है। सिचुएशन इसकी is situated in mid-sternum. It is placed obliquely behind the sternum over the diaphragm. About two-third part of heart lie to the left of midline. मतलब जो टू-थर्ड पार्ट होता है वो लेफ्ट में होता है मिड लाइन के, और बाकी 1/3 पार्ट जो होता है वो राइट में होता है। इसलिए लेफ्ट वाला पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए हार्ट को लेफ्ट में ज़्यादा माना जाता है। फीचर्स, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर, वेट 300 ग्राम मेल में होता है, 250 ग्राम फीमेल में होता है। एक्सटर्नल फीचर, एक अपेक्स होता है, बेस, 3 बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। अपेक्स जो होता है डायरेक्ट डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट इट इज फाउंड entirely by left ventricle. It's situated on the left fifth intercostal space, 9 cm lateral to mid-sternal line. It is open left by anterior border of left lung. Pulsation of heart can be clearly heard at this point. अब आप सुन सकते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड-स्टर्नल लाइन की 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में। Base, it is also called posterior surface. It directly formed by left atrium and by a small part of right atrium. It is the opening for pulmonary vein and superior vena cava and inferior vena cava. It is related to T5 to T8, which T5 to A2 के बीच में होता है। Post anticent open vertebra in erect position. Border जैसे बताया 4 ऑर्डर होते हैं, अपर ऑर्डर, राइट ऑर्डर, इंफीरियर ऑर्डर और लेफ्ट ऑर्डर। अपर ऑर्डर जो होता है वो इट इज स्लाइटली ओब्लिक एंड फॉर्म्ड बाय 2 आर्टिया, chiefly the left atrium. Right order, it formed by right atrium and extended from superior vena cava to inferior vena cava. Inferior
Inferior order, it lies horizontally and formed by right ventricle. It extends from inferior vena cava to apex of heart. Left order, it is obliquely and curved, formed by left ventricle and partially by left atrium. It extends from apex to left ventricle. Surface of heart, तीन surfaces होते हैं. Anterior surface it is also called sternocostal surface, क्योंकि anterior surface जो इसके आगे sternum और coastal मतलब जिस होती हैं. It is formed by right atrium and right ventricle. Most anterior surface covered by lungs. Anterior surface, it is also called type. Anterior surface, it is formed anterior में type क्या होता है? 2/3 of left ventricle and 1/3 of right ventricle. Left surface, it is formed by left ventricle groove or sulcus. The artery is separated from the ventricle by a circular arterioventricular groove or coronary sulcus. लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव होती है, इसको बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सर्कल. द आर्टिया सेपरेटेड फ्रॉम एच अदर बाय इंटर आर्टियल ग्रूव. और दोनों लेफ्ट राइट आर्टियम दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर आर्टियल ग्रुप्स के द्वारा, वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकल ग्रुप के द्वारा. चेंबर ऑफ हार्ट में सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं. राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज अपर चैम्बर ऑफ हार्ट. इट इज फॉर्म्ड बाय राइट border and at the surface base of heart. It receives impure blood by 3 veins: superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. It pumps blood into right ventricle through arterioventricular orifice guarded by tricuspid valve. It is elongated chamber with opening of superior vena cava at upper end and inferior vena cava at lower end. At the right border, a shallow groove is present called sulcus terminals, and it contains the synod pacemaker, जो यही इम्पल्स जनरेट करता है पूरे हार्ट में. पेसमेकर कहते हैं इसे synod को. The upper end is prolonged to the left to form the right ventricle. Internally, right atrium has 2 parts. Rough anterior part has a transverse muscle called musculi pectinati. Smooth posterior part has opening for superior vena cava and inferior vena cava, opening for coronary sinus and opening for small venae cordis minimi. Fossa oblique, it is a small depression at intra-arterial septum. In embryonic life, it is foramen oblique through which blood goes directly into left atrium. After birth, it gets closed and a small pit called fossa ovalis. राइट आर्टियम के बाद अब राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं. इट इज अ ट्रायंगुलर चैम्बर विच रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टियम and pump it into the lungs by pulmonary trunk and arteries. It forms anterior and inferior surface of the heart. The anterior shows 2 orifices, one tricuspid orifice, orifice. Internally it has 2 parts: incoming part, outgoing part. It is connected to tricuspid valve and is rough due to presence of muscular ridge called trabeculi. Outflowing part, it is smooth and give rise to pulmonary trunk. These 2 parts are separated by muscular ridge called supraventricular crest. Between tricuspid and pulmonary orifice, the wall of right ventricle is thinner than the left ventricle in a ratio of 1/3. पेपलरी मसल देख लेते हैं क्या होता है. These 3 muscles, anterior, posterior, and septal, are part trabeculi, carinii.
These muscle regulates the opening and closing of tricuspid valve. चलिए बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम की। It is a quadrangular chamber which receives oxygenated blood from lungs by four pulmonary veins. It is situated posteriorly. It marks the base of heart and upper border. Internal part of left atrium is smooth because musculi pectin and C are less developed. It pumps blood to left ventricle through left atrioventricular orifice which is guarded left atrioventricular valve और bicuspid valve को mitral valve भी कहते हैं। Ventricle it receives oxygenated blood from left atrium and pumps into whole body. It pumps left surface and affects heart internally. It has two inflowing part, outflowing part. Rough due to muscular maculae. It shows left atrioventricular orifice guarded by bicuspid or mitral valve. Outflowing part it opens into aorta and opening is guided by aortic valve. There are two well-developed papillary muscles, anterior and posterior. Chordae tendini from both muscles are attached to both cups of mitral valve. देख लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम बना है। देख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। valves of heart. The valves of heart are fold of endocardium. These valves maintain an directional flow of blood. Two sets of valve are present in heart. Atrioventricular valve. There are two valves. First, right atrioventricular valve, जिसे tricuspid valve कहते हैं. Left atrioventricular valve, bicuspid valve. Both valves are made up of two parts, fibrous ring and flap-like cup. Right tricuspid valve has 3 cups. Left bicuspid valve has 2 cups. Each cup has smooth arterial and rough ventricular surface. Papillary muscles control the opening and closing of valves. Simulant valve. These are 2 in number. Aortic and pulmonary. They are half moon, so called, are similarly valve. Each valve has 3 cups. Fibrous ring absent. These valves are closed during ventricular diastole. Arterial supply. 2 coronary artery arising from aorta. ये जो है एसेंडिक एओर्टा से राइज होती हैं कोरोनरी आर्टरी। एसेंडिक एओर्टा की ब्रांच है। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, कोरोनरी साइनस, लिम्फेटिक्स, ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स एंड ट्रकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई, पैरासिम्पेटिक नर्व, वैगस नर्व होती है और सिम्पेटिक नर्व T45, थोरेसियोटिव 4, थोरेसियोटिव 5 सप्लाई करती है। क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो टेकिकार्डिया, और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है तो ब्रेकिकार्डिया, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इरेगुलर हार्ट रेट मतलब कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता है तो इसे एरिथमिया कहते हैं। रेट्रोस्टेनल पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, लेफ्ट फोर आर्म अप टू नेक, उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, it is a through sclerotic obstruction of the coronary artery. It is also called myocardial infarction, MI. LVH, left ventricular hypertrophy. The walls of the chamber become thick. यहाँ पर आपका हार्ट कंप्लीट होता है। Thank you for watching my video.